Vision, innovation, strategy. Vision, innovation, strategy. Now you out here designing reels, editing captions, fixing thumbnails. You really think Jocelyn done that? Smart captions, fixing thumbnails. You really think Jocelyn smart captions, fixing thumbnails. You really think Jocelyn done that? Smart content will also designing reels, editing captions, fixing thumbnails. You really think Jocelyn done that? Smart captions, fixing thumbnails. You really think Jocelyn done that? Fixing thumbnails. You really think Jocelyn done that? You really think Jocelyn done that? Jocelyn done that? You really think Jocelyn done that? You really think Jocelyn?
You really think Jobs would have done that? Would have done that? You really think Jobs? Really think Jobs? Jobs would have done that? You really think Jobs that? You really think Jobs would have done 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 that? You really think Jobs?
Mama, mama. Yes, mama. Oh, mama. Oi, Sudumi. Saat చేస్తున్నారు సాత్న చేస్తున్నారు Mama, oh mama, พี่ข้าวฮะปั๊บพี่ข้าวใครเจ้าห้องทำงานเลยโมเลย
দেখি গেম নাকি আবার করে কে Caption, fixing thumbnails. You really think jobs will done that? Caption, fixing thumbnails. You really think jobs will done? সত্যের পথে চলি সত্য কথা বলি সত্যের मेरे अल्लाह मुझे माफ फरमा मेरे अल्लाह मुझे माफ फरमा अपनी नफ्स के हाथों गिरफ्तार हो चुका Steve Jobs did not design the iPhone. He did not obsess over every button or pixel. Why? Because he had Johnny Ive. His job wasn't to do everything. It was to focus on the vision, innovation, strategy. Now you're out here designing reels, editing captions, fixing thumbnails. You really think Jobs would have done that? উপলব্ধ হায়াত হসপিটাল You really think Jobs would have done that? তুমি ভাত খাওয়া দে না বাচ্চা আই এই বলে মেয়ে কাপড় কাপড় হলো বলবো তো কখন হাতে নেই ভাই রে ভাই ভারতের তো যাই হোক আজকে আমাদের ক্লাসে আমাদেরকে একটা গ্রামের থেকে আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন এসেছে এই প্রশ্নটা আমাদের হল করে দিতে হয় তার জন্য আমরা এই প্রশ্নটাকে হল করার জন্য হল করার জন্য আমরা খুলেছি এবং কি আমরা খোঁজাখুঁজি করছি যাতে প্রশ্ন জবাবটা আমরা উত্তরটা ভালো করে দিতে পারি মানুষের সম্মুখে আর আপনারা দোয়া করবেন যাতে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা ভালো করে মানুষের সম্মুখে দিতে পারি অনুষ্ঠিত করা দেখিবলৈ পোৱা যায় মুকলি চোৱা thumbnails. You really think Jobs would have done that? ইউপিপিএল দলৰ মুখপাত্ৰ গুলজাৰ হুছেইন ইউপিপিএল দলৰ মুখপাত্ৰকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰি কৈছে বিটিচি অঞ্চলত মেলাৰ নামত যি যোৱা খেল চলি আছে তেনেকে চলি থাকিলে নৱ প্ৰজন্ম বিপথে পৰিচালিত হ'ব ইউপিপিএল দলৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক
নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মেলা নামত জুৱা খেল বন্ধ কৰাৰ Some আহ্বান males জনায়। who really think jobs will be done that. ছাব্বিশে টিকিট পাচ্ছেন না অঙ্কিতা দত্ত, বিস্মিতা গগৈ। টিকিট পাচ্ছেন না কংগ্রেস ছেড়ে আসা রণা গোস্বামী। সম্ভাবনা নেই কমল কুমার বেদী, দীপঙ্কর কুমার নাথেরও। ক্ষমতার কাছাকাছি থাকবেন বলে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন রানা, অঙ্কিতা, বিস্মিতারা। প্রাক্তন আসনেতা দীপঙ্কর নাথ বা কমল বেধিরও একই অবস্থা। 26 বিধানসভায় বিজেপির এই নবাগতরা টিকিট পাচ্ছেন না এবং এটা একরকম স্পষ্ট, কারণ নবাগতদের টিকিট দিতে রাজি নয় শীর্ষ নেতৃত্ব। সাংগঠনিক কাজে খুব কম করেও 5 বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে জনসংযোগের ক্ষমতা। কোনো ধরনের অভাব অভিযোগ থাকলে চলবে না। 26 টিকিটের ক্ষেত্রে এমন কঠিন নিয়মই করে দিয়েছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব তথা এখানেই শেষ নয়। কাউকে টিকিট দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। স্পষ্ট করে দিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব তথা RSS। তাই মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বিজেপিতে এলেও এবং মুখ্যমন্ত্রীর ভোটবুকে থাকলেও টিকিট পাওয়ার প্রায় কোনো সম্ভাবনাই নেই রানা, অঙ্কিতা, বিস্মিতার। টিকিট পাচ্ছেন না বসন্ত দাস। সেনা বিধায়ক সালমান আলী আহমেদের নির্বাচন খেলি কমিটি। ফৰেষ্টৰ যিখিনি ইণ্টাৰভিউ দি পেলাই গ্ৰেড 1, গ্ৰেড 2 চাকৰি দিছিল, সেইটো লিগেল ইলিগেল, সেইটো আমি আজি আলোচনা হৈছে, এইটো চাব দিছে। যদি ইলিগেল হয় সেইটো কেঞ্চেল হ'ব, যদি লিগেল হয় হৈ যাব। আৰু আমি জানাত BCDC ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে যিটো নিযুক্তি দিছিলে সেইটোতো আমি জানাত ইলিগেল। যেন হওক আমি আইনগতভাৱে আমাৰ ল অফিচাৰ আছে, ইহঁতক চাব দিছে। Jobs will be done that. Smart founders will house. যদি কেঞ্চেল কৰিব Thumbnails who really think jobs will be done that. Smart founders. See thumbnails who really think jobs will be done that. Smart founders. যিমান টেণ্ডাৰ হৈছে টেণ্ডাৰ হৈ পেলাই ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ দিছে বা কাম কৰা নাই, ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ যদিও দিছে কাম কৰা নাই, বা টেণ্ডাৰ হৈছে ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ হোৱা নাই, এইবিলাক প্ৰত্যেক Really think jobs will be done that. Jobs will be done that. Smart. Really think jobs will be done that. Smart. সরকার গঠন করিয়ে Really think jobs will be done that. Smart founders will outsource what's not poor. So we can build that. Smart founders will outsource what's not. That smart founders will outsource what's not poor. So we can build what actually matters. So done that. Smart founders will outsource what's not poor. So we can build what actually matters. So really think jobs will be done that. Smart founders will দেশের পাখি বিদেশি মুখে দিয়া ফাঁকি রে সোনার বড় এফালে ৰাজ্যবাসীৰ চকুপানী শুকোৱা নাই, আনফালে দীপাৱলীত ফটকা ফুটাবলৈ তৎ নোহোৱা হৈছে হিমন্তৰ। দীপাৱলীত আতচবাজি ফুটাবলৈ নাপালে যেন ফূৰ্তি নালাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ৰাইজক বোমা ফটকাৰে উৎসৱত মতলীয়া কৰি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বিষয়টো পাহৰাব খুজিছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক, ধান খেতিয়কৰ কথা চিন্তা নকৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইবাৰ বৰকৈ চিন্তা হৈছে বৰপেটাৰ আতচবাজি ব্যৱসায়ী লৈ। কিন্তু কিয় দীপাৱলীত বোমা ফটকা ফুটাবলৈ ব্যাকুল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী? জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ দুখ পাতলাই নাই অসমৰ ৰাইজৰ। এতিয়ালৈকে অসমৰ মানুহে গম পোৱা নাই কিদৰে মৃত্যু হৈছিল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ।
ৰাজপথ আৰু সামাজিক মাধ্যমত লাখ লাখ মানুহে ন্যায় বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে। তেনে সময়তে পাৰে বিংকৰ কথা কৈ বহুৱালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এইবাৰ কাঠে কাঠে পৰিছে যেন লাগিছে এটা বিষয়। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীক অপেন চেলেঞ্জ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উপমন্যু হাজৰিকাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীক আদালতৰ কাঠগড়াত থিয় কৰাই সুযোগ এটা ভালকৈ পাইছে উপমন্যু হাজৰিকাই। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত সকলো কেলেংকাৰীৰ এটা এটাকৈ জেৰা কৰাৰ সুযোগ এটাৰ নিজেই সৃষ্টি কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে। নিশ্চয়কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই উপমন্যু হাজৰিকাকে ধৰি 23 জানুৱাৰীৰ সংবাদমেলত উপস্থিত থকা মুঠ 6গৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ আদালতত মানহানিৰ গোচৰ তৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ জাননী লাভ কৰা নাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উপমন্যু হাজৰিকাই। সংবাদমেলৰ জৰিয়তে উপমন্যু হাজৰিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীলৈ পোনপটীয়া প্ৰত্যাহ্বান। ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই নিজকে সন্মানীয় ব্যক্তি বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব, কিয়নো মান সন্মান থাকিলেহে মানহানিৰ গোচৰ তৰা হয়। ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা আৰু তেওঁৰ স্বামীক জেৰা কৰাৰ এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ। হাৰি যাব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকীক প্ৰধানমন্ত্ৰীক বহুত দেখিলো, এনেকুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী দেখা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী দেখে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুনিব লাগে ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথা। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় নিজৰ দুখৰ কথা। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुख आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर बोले आह्वान प्रियंकार मेरे भाई से অমা মা মাটি পত্তা দিয়াৰ বাবে ডাঙৰ বক্তব্য কৰিছে বিজেপি প্ৰধানগৰাকীয়ে। তেওঁ কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিদৰে তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেইদৰে নাই বাচা না তেওঁ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। আৰু বিজেপিৰ ৰাইজে সকলো ৰাইজে মাটিৰ পত্তা পাব বুলি ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু মাটিৰ পত্তাৰ বাবে 200গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী লাগিব বুলিও ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। হাজৰামা বকিৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিজেপিৰ ৰাইজক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি मेरे अल्लाह मुझे माफ फरमा, अपनी नफ्स के हाथों गिरफ्तार हो चुका, मुझ पर रहम फरमा। तेरी राह पाने के बाद फिर से किसी को साल में 1 करोड़ कमाना है, what kind of cafe, restaurant, club you should open. Even if you have a छोटू, you know, very senior restaurant, and as long आप कुछ heartfelt कर रहे हो जो resonates with the current audience, you have a chance to become a big success.
top 3 opportunities of Delhi, exact from a cuisine point of view. समोसे में ये opportunity है, छोले में opportunity है, आप South Indian food पकड़िए, infinite skill possible. आज के हमारे गेस्ट है रियाज अमलानी, द मैन बिहाइंड सोशल और इंडिया के 80 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के ओनर है। आज वो एक 800 करोड़ का रेस्टोरेंट एम्पायर चला रहे हैं। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी रेस्टोरेंट ब्रांड कैसे बनाया जाए। कोरियन फूड रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, इंडिया में कौन सा कुजीन जिसकी अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है? Entire food services business in the country is 5,000 crores. The food business is going to grow. If you had 1 crore rupees, which city will you open a restaurant? My top 3 cities would be Bombay, Delhi, or Bangalore. Take 100 rupees for me in terms of expense. About these food cost. 15% आपका rental होगा, 10% is going to be overheads, 20% for miscellaneous, and 20% is what you hope to take home. Which city drinks the most? Telangana, Kerala. They like the drinks. Which alcohol sells the most? Yeah. After that, whiskey. Tequila is really taking over now. Why do you feel कि हुक्का एकदम से इतना viral क्यों हो गया? सबसे पहले तो it allows you to hang for a long time and it relaxes you. Most common 3 mistakes जो नए restaurant owners करते हैं. Bad choice of location. Number 2, sometimes you undercapitalize your business. And third is panic. You panic too quickly. एक normal चीज को अगर महंगा करके बेचना तो what else do you do? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते हैं। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। ओके, हाउ डिड यू बिकम a restaurant? ये स्टार्ट कैसे हुआ? I heard somewhere story कि आप आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, what was that? इसके से क्या क्या था? हाँ, मैं एक नोटिस पर किया था कि मतलब खाली आपका जो रोमांस होता था सिर्फ गाड़ी में होता था। There was no place to go. There was no place to hang out. And I think at that point of time, that's when we first started Mocha, where we wanted the insight was that. And before that, I was in the entertainment business, but the insight really was कि आदमी को अगर मतलब जाके chill करना है तो कहाँ जाके chill करना है. और Starbucks has become very popular in the West, so this coffee shop thing. And as usual, तभी हमारा excitement था कि West का तभी obsession था. Starbucks जैसा यहाँ पे कुछ. हाँ, Starbucks जैसा यहाँ पे कुछ. और I think तभी बजिस्ता तक भी चला. उसने मतलब Starbucks टाइप कॉन्सेप्ट दिल्ली वाला था ब्रांड, वहाँ से आया। और एक और कॉन्सेप्ट था कैफे कॉफी में, which was from a coffee producer in the south, and that came from the first one was in Bangalore, but this was in Delhi, and I wanted to do a coffee shop, but I didn't want to do Indian version of an American chain, American Italian inspired chain. I didn't want to do that. So we came up with this concept which is called Mocha, which is more on the lines of an Arabic coffee house. Our approach was Mocha, which is very different from chill करने के लिए. But why do you think कि cafe coffee day और barista वो work नहीं करे? At that point of time, तभी हम चाय के 5 रुपए देते थे. नेस्कैफे का 4 रुपए का इतना सा कप आता था, शॉट जितना, है ना, तो शॉट 4 रुपए का वो टाइम पे कैपेचिनो को 35 रुपीज में बेचना बड़ा मुश्किल काम था, और वो बरिस्ता भी 30, 35, 40 रुपीज में बेच रहा था, और कैफे कॉफी भी 35, 40 रुपीज में बेच रहा था। ओसीगर की सबसे बड़ी ब्लैक फ्राइडे से आ गई है। सेल्फ होस्टेड एनएटेड प्लान्स अब केवल 499 रुपए प्रति महीने से शुरू। हमारे एनसीपी संचालित एआई असिस्टेंट के साथ असीमित कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑन। लेकिन जो हमारे रियल एस्टेट रेंटल्स हैं are highest in the world. It's cheaper to get real estate in New York and London than it is in India. Really? Yes. You need an average spend of 500 rupees, 600 rupees per person to be able to afford rent. And we're not getting that at that point of time. But फिर ये मौका में आपको नहीं लगा कि मौका में भी प्रॉब्लम होगी? मौका में हमारे पास we were more than about coffee.
About we had coffee. We also had lovely desserts. We had shisha. We were, because it was a Moroccan coffee house, and again we were not just an espresso bar. We were serving 32 different types of coffee beans, not just 32 variations of the same coffee. You opened Mocha in Indore also, no? We opened Mocha. So I remember that, and I remember today मैं बहुत जा रहा था Mocha मेरे दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरे friends को शीशा पसंद था. So they used to sit there. That was my first time in life मैंने Kit Kat shake पिया था. So I remember. और एक होता था, I remember Thursday nights को उधर live music होता था. So हम live music के लिए जाते थे कि वो guitarist आने सिंगर है. That was the first time किसी एक जगह पे इंदौर में किसी ने live consistently music होता था. We used to go for that, and then my friends used to do shisha. And then फिर वापस आ जाता. तो it was famous for कि शीशा और live music मिलेगा. और अगर दिन में चले तो लोग खेलते रहते थे कुछ ना कुछ. हमेशा आपको एक चीज आपको देना है. आपने बनाई है, प्रोडक्ट बनाया, रेस्टोरेंट बनाया और आपने ऑफरिंग बनाई, वो आपका काम था. लेकिन जो आपका रेस्टोरेंट बनता है वो इट कैन डिपेंड ऑन व्हाट द कस्टमर्स वांट यू टू. So there's a little bit of a change and a little pivot, slight pivot that happens. Customers, you have to, at the end of the day, forget what you want. You have to listen to your customers, and they're going to meet you what they want them to be. And you have to be able to be flexible enough to make that shift. कॉफी का एक और ये प्रॉब्लम था ना, जब लोग हैंग मारते हैं तो 1.5 घंटे का हैंग मारते हैं मिनिमम. 1.5-2 घंटे का हैंग. कॉफी आपकी मतलब 30 मिनट में खत्म होगी. तो बाकी का 1 घंटा है ना, आप क्या कर रहे हो? आप जगह रोक रहे हो, तो आपको थोड़ा अनकंफर्ट रहता है, डिस्कंफर्ट. I think that's one of the reasons why we also pivoted from Mocha into social. But what we realized that people want to hang out. At Mocha they had a shisha. Like in 2008 when जब shisha ban आया, we decided we didn't want to be in the shisha business because it was becoming too much. बहुत ज़्यादा people only coming for shisha, underage काफी आ रहे थे. Stopping them was becoming a little bit of a challenge. Why do you feel कि हुक्का एकदम से इतना catch on क्यों हो? Viral क्यों हो गया था? Like this is हर किसी को हुक्का चाहिए. Well, सबसे पहले तो it allows you to hang for a long time. That you said. That's a it anchors you to the table, right? And there's a sense of, it relaxes you because you're taking deep breaths. It puts you in that, relaxed frame of mind. People, you start seeing them lounging, relaxing. And once you are in that relaxed frame of mind, it's very different. Like, the furniture dictates the kind of conversation you want to have, right? अगर आपको एकदम stiff chair, table और chair दिया है, your conversations will largely be stiff. But if I let you lounge around and stand and lean back, it automatically puts you in a much more informal kind of thing. It changes the nature of your hang. It's weird, but it does happen. You tend to have more real conversation, more relaxed, more fun. So I think there was a little bit of that. You became a little bit more relaxed. You could hang out now for 2 hours. You were unhurried. You didn't feel कि मतलब आधा घंटा हो गया, अभी निकलना चाहिए. एक माइंड में होता है, am I taking up somebody else's place? अच्छा बाहर कोई खड़ा है, वेट कर रहा है, मैनेजर देख रहा है, हाँ मैनेजर देख रहा है. But as long as you had the hookah, you had all the right to be there. So you were still in a relaxed way. I think the ritual of passing the shisha around, puff puff pass. So then Mocha बंद करके social start किया. Social क्यों start किया? We see, जब हमने coffee shop बनाया, Mocha was for a different set of audience. It was a Gen X audience who needed places to lounge and relax and chill. We had a very good run with Mocha. Mocha is still there. It's still alive and well. We've got 22 stores. But then in non-metros where the rentals don't make sense in metros for Mocha. But we needed to pivot because we had too much of an overhang association with shisha. Hookah के साथ में बहुत ज़्यादा association का नाम हो गया था. तो हम सोच रहे थे कि इसको कैसे रीइन्वेंट करें, because जिस दिन हुक्का बैन हुआ, लोग हुक्का आना बंद कर दिया. They stopped even coming for the shakes and the desserts because everything. I think लोगों को मतलब वो brand association ऐसा हो गया था.
and we आइडिया कैसा है? and we kind of realize that we need to reinvent. TCS CEO laid off 12,000 employees in just one day. And here's what he said. These professionals were let go because they failed to integrate artificial intelligence into their daily work. They were spending hours on tasks AI could finish in minutes. But here's the bigger problem. Your company won't train you either. They'll simply replace you with someone who already knows how to use AI tools. This is exactly why I created B10X back in 2023, because I knew this day would come when professionals would either be 10x more valuable or 100% replaceable. And since then, I've helped over 1 lakh professionals become AI tools experts. And here's the crazy part. Not a single B10X graduate has been laid off till date. In fact, while layoffs dominate the news, our students are sending in promotion letters, salary hike screenshots every single day. And you can become one of them by not spending years or months, but simply joining me for 3 hours this Sunday, where I'll walk you through how to use 10 plus AI tools to automate your day-to-day work, save hours, and make yourself irreplaceable at your job. What is a cafe? And we cannot let the West dictate कि इंडिया का कैफे क्या होना चाहिए. इंडिया का कैफे क्या है, क्या क्या होना चाहिए, वो हमने देखा. और हम लोगों ने बहुत सारे हमारे जितने भी कैफेज हैं, हमारे सोशल स्पेसेस क्या हैं, जो नेचुरली हमारे सोशल स्पेस हैं. जैसे चाय की टपड़ी हमारी एक सोशल स्पेस है, कॉलेज का कैंटीन हमारा सोशल स्पेस है, कैलकाटा का कॉफी हाउस हमारा सोशल स्पेस है, केरला का टॉडी शॉप हमारा सोशल स्पेस है, पंजाब का ढाबा हमारा सोशल स्पेस है. आपका जो रात को 12 बजे गाड़ी में जो खाना मिलता है वो हमारा सोशल स्पेस है. तो उसको हाउ डू वी इंटीग्रेट ऑल ऑफ दिस एंड क्रिएट अ प्रोडक्ट बिल्ड for the indigenous population, because हमारी जो चाय ब्रेक होती है, हम कॉफी और बिस्कुट ही नहीं खाते, हम चाय और खाली बिस्किट खाते हैं, है ना. हमको कचौड़ी चाहिए, चाय के साथ चाट चाहिए, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा क्रॉस. ठीक है, चले है, ठीक है, खा लेंगे, लेकिन जो हमें क्या चाहिए. तो सोशल वाज a kind of a relook where we instead of looking westward for our inspiration, we looked very inward. And I think that was at that point of time a little bit revolutionary again, because everybody was still at that point of time still looking a little westward for key product hona chahiye, ye product hona chahiye. But social really came from what is the cafe of India look like. And again, हमारा जो design inspiration था came from Janta Bar, came from any dim lights. ऐसे क्यों होता सर आपको? थोड़ा सा social is like little dim. Because in the night, because social changes from day to night, it shape shifts, and there are two ways of shape shifting. One is with the music, and the second is with the light. In the day, you want it to be bright, lighter, fresher. We use scents again, which are again very different. And it shape shifts, and we change our lighting and doing music 3 or 4 times in the day. In the day it's super bright, then afternoons also bright. Evenings and dusk will become a little bit brighter because बाहर अंधेरा हो गया है, बाहर की लाइट कम हो गई है, लेकिन अभी भी सूरज नहीं ढला, so we want that thing to go brighter. Then 7 o'clock when we start taking the lights lower, and 9:30 we take the lights really low. And the music changes, the vibe changes, the kind of audience changes. In the day, people are coming for working, and we have a thing, no working during day. So it shifts, or it changes its relevance. So from the menu to the offering to the lighting, people like when they're going out up drink, smoking भी नहीं करते, drinking भी नहीं करते. पर मैं ज़्यादा social, बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ. People like a slightly more relaxed atmosphere when they're unwinding. So I have too many questions on social. Because मेरे को बहुत fascinating लगता है, and the most fascinating thing which about social is I find out, बहुत पहले से मैं social देख रहा हूँ, वो आज तक relevant है. Like मैंने कोई कैफे, कोई ब्रांड नहीं देखी जो इतने सालों तक relevant था. वो स्टार्टिंग में 1-1.5 साल, 2 साल बहुत cool, 6 महीने तो साल भर बहुत cool रहता है सब चीज़. सबको उस जगह पे जाना होता है जो नई चीज होती है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इट्स लाइक डेड. वो रेस्टोरेंट, बार, कैफे वो डेड हो जाता है अंटिल बहुत ट्रेडिशनल जैसे शिव सागर नहीं है, राइट? ऐसा कूल कैफे जो कूलनेस की वजह से लोग अब नॉट सीन की जो टाइम टेस्टेड लाइक इट इज बीन देयर. प्री पैंडेमिक भी कूल था, पोस्ट पैंडेमिक भी कूल है, आज भी कूल है. लाइक हाउ इज दैट? Hey, sorry for interrupting you, but I need to tell you something very interesting. All the
तो ये कैसे, like, how did you build this? We try and be relevant and we do what we say on the box. आप सोशल तब जाओगे आपको मतलब आपको मतलब कोई फैंसी जगह नहीं जानी है, आपको मतलब जाके चिल करना है, रिलैक्स करना है, मतलब अड्डा मारना है आपको, आपको खाली हैंग करना है, आपको you want to catch up, that social is going to be a reliable place where it's going to do what it says on the box. You're going to get the food of a certain quality, you're going to get value for money, and I think the biggest thing is the people. I think the staff that we work with are trained to build connections, because at the end of the day, you're always going to find trend seekers and you're going to find discount seekers, but people are also looking for they're looking to be recognized, seen, heard, known, and in social I think they get that. They get a sense of community. They get a place where people are, they know, everybody knows their name, they know the people's name, everybody knows what their favorite drink is, what their favorite food is, what time they're going to come. So there's a certain set of community which we try to build, and that's why it was called social, because we wanted that place to become, we take the name of the location which we serve from the beginning. And we want that place to become that social. कोलाबा का social, कोलाबा का खार social, social, खार का social, और ये मतलब जो आप खार में रहते हैं, जो खार में काम करते हैं, and we make it a point of time to make people meet other interesting people in that space. So hopefully मतलब आप जाएं तो not only will you know the staff, you will also know quite a few other regulars who are there. So it builds a kind of a very homely kind of environment, which I think is important. but you kept doing a lot of things जो shareable है, बहुत ज़्यादा viral भी है in some sense, and what I mean by that is I'll tell you few things जो जब मैं सोच रहा था I would notice. Beginning में a lot of the things that we were doing, because हम लोग मतलब टिफिन में जैसे टिफिन में देते थे, या टिश्यू का डब्बा टेबल वो टॉयलेट पेपर वाला social लिखा हुआ है, और वो मतलब it was more from a nostalgia perspective, and because it was unexpected at that point, कभी किसी को नहीं लगा था कि मतलब जेल के प्लेट में आप खाना दोगे या वो मेलेमाइन पेस्ट में डालोगे या टॉयलेट पेपर रखा हुआ टेबल पे या पुराना कनिस्टर रखा हुआ टेबल पे. It was more from a sense of evoking nostalgia. तभी Instagram इतना deep नहीं हुआ था, so it was never designed for Instagram. उसके 4-5 साल बाद this word came to be, which is Instagrammable. And a lot of restaurants suddenly started saying, oh, this is the most Instagrammable restaurant. Yeah. So it was never, from our idea was never to become Instagrammable, because Instagram was not that. तभी Facebook का जमाना, तभी Facebook था. But see, social also came from social media. So 3 things. One is the act of being social. The fact that we were saying social offline. So at that point of time, we were saying that even now our Instagram handle is social offline. What we're saying is that social experiences need to be offline. They cannot only be, or you can't think of social spaces as online spaces. Yeah. Right? So you thought कि social जो offline social offline, exactly. It was, and then we used the hashtag to kind of say that, to remind people that if you're being social, you can also be social offline. It doesn't always have to be online. So first was ये टिफिन जेल जैसे टिफिन में खाना आना, फिर टॉयलेट पेपर, then एक I remember Long Island tea थी, that was the star जैसे बेचते थे, that was a, is it still there? It's still there, still a #1 bestseller. Long Island tea used to be एक ही Long Island tea में बहुत लोगों को चढ़ जाती थी. Long Island iced tea, yes, yeah. Then after all of this happened, then the other thing which I loved it, which was I think post pandemic में देखा था, ऐप पे कोई फीचर था कि पास वाला क्या खा रहा है. People around you. That I loved it. मैं हमेशा अपना ऑर्डर दूसरों को देख के करता था. यार वो वाला क्या, कभी तो ना आप थोड़े से वो होते हो कि यार आप स्टाफ से पूछो कैसे कि बॉस ये क्या खा रहे हैं, because you don't know, it looks nice. अच्छा लगता है, सही बात. तो अब ऐप पे मुझे दिखा देता था. That was so. उन्होंने 2000 में सीखा था कि किसी एक टेबल पे हमारा चॉकलेट एवलांच हो रहा था मौका, तो लोग ऑर्डर नहीं करते थे, लेकिन किसी और के टेबल पे जाता था तो बाजू वाला जरूर ऑर्डर करता था. तो कभी होता है, you want glasses bigger. Yeah. So you put that. You were the first ones to do it? On that? On the app, I think so, yeah. I
think it was a feature that we had brought about. Yeah. I found it really cool. I think उसकी वजह से सोशल में मेरा बिल ज़्यादा बनाते हैं नॉर्मल कि मैं खाने गया था एक चीज़ बट जब तक मेरा आया तब तक मुझे ऐसा लगे था कि दूसरा तो मुझे चाहिए चाहिए It is happen ना कभी किसी का वो interesting दिख गया तो Yeah. Then एक और चीज़ के लिए मैं सोशल लोगों को लेके जाता which was my जहाँ पे I started making people एक डिश लॉन्च करी थी उसमें भूल झुलकिया मोमोज और समथिंग हाँ बहुत जलो गया मुझे हाँ which is the spiciest आपको दिखाना पसंद है मुझे बहुत पसंद है और वो एक इंसान खत्म नहीं कर सकता एटलीस्ट आपका चैलेंज मेरा ये चैलेंज है मैन वर्सेस फूड राज वर्सेस फूड क्योंकि आप आओ और ये खा लो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था इन बैंगलोर I can't tell you. Did they give you a free lemonade with it? Because that was the thing. कि मतलब if you finish. Nothing कुछ नहीं दिया कुछ नहीं मैं पहली बार तो फुल खा ही नहीं पाया हाँ वो तो नहीं वो था हमारा वो चैलेंज था कि if you finish it you get a free lemonade. Okay. कुछ और lemonade आता था ये fire extinguisher shape में. Oh. So which alcohol sells the most? In India. India is very fond of beer. We love beer. Which is the number one selling alcoholic beverage. After that, whiskey. Whiskey is the number two selling beverage in the country. But tequila is really taking over now. People are loving tequila and they're moving towards tequila more and more. All the cocktails are moving from old fashions to palomas and picantes. And it's really taking a market share away from gin, vodka, and whiskey. Teenagers are building businesses with AI, while the only... If you really think jobs will become that smart formula, they outsource what's not core so they can build what actually matters. So if content is eating up your time, DS, you are what you have. Your vision deserves your energy. Let us handle the content. Steve Jobs did not design the iPhone. He did not obsess over every button or pixel. Why? Because he had Johnny iPhone. Jobs knew his job wasn't to do everything. It was to focus on the picture, vision, innovation, strategy. Now you're out here designing reels, editing captions, fixing thumbnails. You really think Jobs would have done that smart formula? They outsource what's not core. So you really think Jobs would have done that smart formula? They outsource what's not core. So what cores? They outsource what's not core. Done that smart formula. Yeah.